Hello, children. Good morning to all. Students, today we are going to learn about articles. One of the easiest topic in grammar, articles. Right? Although most of you must be knowing about articles, but we are going to see some important rules regarding articles. Okay? But before that, let us see what are articles. The articles are the words a, an, and the. These are the words which are articles a, an, and the. Okay, they define whether something is specific or unspecific. Specific means particular or general. Okay, so there are two types of articles, students. You all should know this. There are two kinds or types of articles, which are definite article and indefinite articles. So definite article is the. Definite article कौन सा होता है? The. And indefinite articles कौन से हैं? A and an. Okay, these are definite and indefinite articles. Now how you will learn them? Definite article means जो definite चीज़ होती है, specific, और हमेशा specific या particular चीज़ के साथ the use करते हैं. Okay, so the क्या हो गया? Definite article. And indefinite, which is not specific, which is general, उसके साथ हम क्या use करेंगे? A or an. Okay, so indefinite articles कौन से हो गए? A and an. Okay, so definite article is the, a and an are indefinite articles. Okay, now let's see about them in detail. A and an are called indefinite articles because these do not point out to any specific person or thing, but talk of things in general. This I have already told you. A और an को हम indefinite articles क्यों बोलते हैं? Because ये किसी particular चीज़ के बारे में नहीं बताते हमको. Okay, they talk of things in general चीज़ों के बारे में. There is a car near the gate. कि कोई कार है गेट के पास. Please send me an email about your plans. एक email भेजो about your plans. So here A and an are talking about general things, nothing particular. Okay, that's why they are called indefinite articles. The is known as definite article. Why? Because it points out to a particular person or thing. ये point out किसे करता है? किसी specific या particular person or thing को. Like, this is the house I live in. अच्छा, here we have used the. Why have we used the? Because यहाँ पे कौन से house की बात हो रही है? उसी house की बात हो रही है जिस house में I live in, जिसमें मैं रहती हूँ. This is the house. कौन सा house? That particular house in which I live. So particular चीज़ों के साथ we have used the. Okay, because यहाँ पे किसी general house की बात नहीं हो रही है, उसी house की बात हो रही है जिसमें आप रहते हो. So here the house is specific. उसी particular house की बात हो रही है. That's why you have used the, not a or an. Okay. So students, there is some important information. Like you all know, there are 26 alphabets in our English language, right? Out of which 5 are vowels, A, E, I, O, U. This you all know. These are vowels, and other 21 alphabets are known as consonants. Okay, this you all should know. 5 are vowels, A, E, I, O, U, and other words, other letters of alphabets. बाकी जो letters बचे हुए हैं 21 letters, उनको क्या कहते हैं हम? Consonants. Okay. Now let's see difference between a and an. That means हम a कब use करेंगे और an कब use करेंगे. सबसे important बात students, a and an are used before singular countable nouns. हमेशा और an singular countable noun के साथ यूज होगा. आप सबको पता है a हमेशा singular के साथ यूज होता है, right? Like a chair, a box, a pencil, right? We are talking about one here. Okay, and one important thing, a is used before a word beginning with a consonant sound. A हमेशा उस word के साथ use होगा which is starting with a consonant sound. Now you all know what are consonants, right? But consonant sound, okay, not consonant letter. कॉन्सोनेंट जिसमें कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, जिस वर्ड में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो स्टार्टिंग में, उस वर्ड के साथ आप अ यूज करोगे. अब कॉन्सोनेंट साउंड मतलब क्या हुआ? लाइक अ टावल. ओके, नाउ हियर व्हाट साउंड इज कमिंग? टावल. ट साउंड इज कमिंग, राइट, विच इज नॉट अ वोवल साउंड. एक वोवल साउंड नहीं है ये, राइट. अगर वोवल साउंड होती तो हम एन यूज करते.
tall, right? So t use हुआ है, that is consonant sound, and that's why you have used a. A pen, p sound is coming in this. Pen, p sound. Okay, and p is not a vowel sound. Okay, that's why we have used a pen. Okay, you all have to remember that the word should start with a consonant sound, then only you will use a. राइट उस वर्ड में जो साउंड आ रही होगी ना स्टार्टिंग में, वो कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए. दैट मीन्स वॉवल साउंड के अलावा होनी चाहिए वो साउंड. देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज अ, अदरवाइज यू आर गोइंग टू यूज एन. ओके, ये आपको वर्ड देख के उसकी साउंड को सुनना है, राइट? आप जो वर्ड देखोगे पहले उसको आपको बोलना है, एंड देन यू हैव टू जस्ट ट्राई इट आउट एंड जस्ट टू फाइंड आउट which sound is coming. According to that you are going to use or an. Okay, now here I am having an important fact for you, and now you must be thinking कि ये हिंदी के words letters क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश के सब्जेक्ट में. No, it's like these are swar. Okay, swar means vowels in English. Okay, in Hindi you call it swar. आपने पढ़ा भी होगा ये, right? All these are swar, all these are vowels in Hindi. Okay, so ये मैंने आपको क्यों दिखाए हैं? So that आपको clear हो meaning that इन केस आपका कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है और उस वर्ड की स्टार्टिंग में इनमें से कोई सी भी साउंड आ रही है. ओके, ये आपको साउंड सारी पता है, अ ई उ ऊ. ओके, इफ यू आर हैविंग साउंड ऑफ एनी ऑफ दीज वॉवल्स, इनमें से किसी की भी आपकी साउंड आ रही है उस वर्ड में, उस वर्ड के स्टार्टिंग में, देन यू आर गोइंग टू यूज एन. तब आप अ यूज नहीं करोगे, तब आप एन यूज करोगे. These are in all, ये सब क्या है जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे? These are vowel sounds. ये क्या है? Vowel sounds. So सबसे easy way क्या है just to find out a will be used or an? If your word is starting with these sounds, okay, then we will use an. और अगर आपका word except these sound, कोई भी sound आ रही है उस word में starting में, then you are going to use a. Okay, like let's take an example. Now listen carefully students. A union. अच्छा, नाउ यू विल से दैट मैम यूनियन में तो यू आ रहा है, और यू तो क्या होता है? एक वॉवल. आप सबको पता है वॉवल ए ई आई ओ यू होते हैं, राइट? सो यू तो एक वॉवल है, राइट? बट स्टूडेंट्स अगेन आपको लेटर्स पे नहीं जाना, आपको साउंड देखनी है. अ यूनियन, य साउंड इज कमिंग, य, एंड य साउंड इज नॉट अ वॉवल साउंड. ओके, आपको जो मैंने आपको हिंदी के जो मैंने अभी आपको स्वर दिखाए थे, एक्सेप्ट दोज, कोई सी भी साउंड आ रही है, सो यू विल यूज अ. ओके, सो अ यूनियन विल बी देयर बिकॉज हेयर य साउंड इज कमिंग, य विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट के साउंड हमेशा क्या यूज करेंगे हम? अ. समझ में आ गया आपको? सो यू डोंट हैव टू गो ऑन लेटर्स. आपको लेटर्स के हिसाब से नहीं फाइंड आउट करना, आपको साउंड के हिसाब से फाइंड आउट करना है. ओके, देखो इन द सेम वे अ यूनिवर्सिटी, हेयर ऑल्सो विच साउंड इज कमिंग? य. यूनिवर्सिटी, य साउंड इज कमिंग, और य साउंड वॉवल साउंड नहीं होती है. दैट्स वाई वी विल यूज अ. अगर वॉवल साउंड होता तो हम क्या यूज करते? एन यूज करते. ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द साउंड. आपको लेटर्स नहीं देखने की ए ई आई ओ यू जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे एन यूज करना है. नो, यू हैव टू चेक आउट द साउंड. स्टार्टिंग में उस वर्ड में कौन सी साउंड आ रही है, दैट यू हैव टू चेक. अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू यूज अ और एन. ओके, जैसे इन वर्ड्स में यू इज यूज्ड विच इज अ वॉवल, बट साउंड कौन सी आ रही है? य की साउंड आ रही है विच इज अ कॉन्सोनेंट साउंड. ओके, एंड कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम क्या यूज करेंगे? A. And with vowel sounds we will use an. Okay, I hope it is clear to you now when to use a, when not to use a. So the slide that I have shown you of Hindi, right, of Hindi vowels, okay, just remember them. If in the starting of any word, किसी भी word के starting में उनमें से कोई भी sound आ रही है, then you will use an because those are vowel sounds. और उसके अलावा except those sounds, then you will use a. Okay, an is used before singular countable nouns that begin with vowel sounds. an भी हमेशा singular countable nouns के साथ यूज होगा, but कब यूज होगा? when there will be vowel sounds in the starting or the beginning of the word. vowel sound होगा, like an apple, right? apple.
right? So a sound is coming. Okay, so we have used an. Okay, an egg, a sound is coming, consonant sound, so we have used an. हमेशा vowel sounds के साथ an use करेंगे, consonant sounds के साथ o use करेंगे. Okay, now just see everyone, let's take one more example. An hour, an hour. अच्छा, now you will think कि मैम इसमें तो h आ रहा है और h तो vowel नहीं है, बट फिर भी हमने an यूज किया है. क्यों यूज किया है an? Again you have to check the sound of the word. R, R, which sound is coming? A sound is coming, and A sound is vowel sound, और vowel sounds के साथ you are going to use an. Okay, so here you have used an. So whenever you have to use a or an, first of all you have to check the sound that is coming at the from the beginning of the word. Okay, उस word की starting में कौन सी sound आ रही है, that you have to check. If it is a vowel sound, then you will use an, और अगर vowel sound नहीं है, then you are going to use a. Okay? Before abbreviations, where the first letter is pronounced with a vowel sound, an is used. Like abbreviations. Okay, short forms. What are abbreviations? Short forms. Like an MP. Now in MP, which sound is coming? A. A sound is coming, which is a vowel sound. So you will use an. Same way, an M.B.A. Again, a sound is coming, and a sound is vowel sound. That's why we have used an. Okay? So you have to check the sound, vowel sound and consonant sound a. Uses of indefinite articles. Okay, I've told you there are two kinds of articles. Indefinite. Indefinite means जो specific नहीं होते. So कौन से नहीं होते? A and an. और definite जो specific होते हैं the. Okay, so let's see uses of a and an. A or an is used before singular nouns in general sense. हमेशा हम singular nouns के साथ use करेंगे. और general sense में जो बात हो रही हो, please get me a new pen. A new pen, कोई सा भी new pen. No particular thing is described. Okay, before a singular countable noun mentioned for the first time. ऐसा कोई भी noun जो आपने first time mention किया है. Like, I have never seen a partridge. Partridge is like hen sort of. Hen होती है ना, like that. So, I have never seen a partridge. Here you have used it for the first time. So, a is used. Before an expression of quantity. कोई भी आप quantity की बात कर रहे हो. A couple, a dozen. Like 12 are there in dozen. So, a dozen, a couple. 2. Before units of price, speed, ratio. Like a litre. A kilo. Before certain numbers like a billion, 1,000 rupees. These are the uses of or and. Okay. With half, when half follows a whole. That means 1.5. Okay. So 1 क्या है? Full number है, whole number. Okay. And half means उसका half. So when half is followed by whole number like 2.5, 3.5. So हमेशा हम a use करते हैं ना half से पहले, right? Like 5.5. In expression of frequency, what is frequency? कितनी बार हुआ है कोई काम? Twice a day, thrice a day, once a day. Okay? In certain exclamatory expressions, what a pity. कितना बुरा हुआ? What a pity. Okay? So these were some of the uses of indefinite articles. Now let's see uses of definite article. Which is the definite article? The. So the is used to refer to a person or thing in particular. This I have told you. कभी भी आप किसी particular person या place की बात कर रहे हो, that time you are going to use the. I have lost the pen that you gave me. Now here listen. We are talking about the pen. कौन से pen की बात हो रही है? वही pen जो आपने मुझे दिया था. Okay, so we are talking about that particular pen. किसी भी general pen की बात नहीं हो रही है. कौन से pen की बात हो रही है? We are talking about the pen that you gave me, जो आपने दिया था. So for particular things, we are going to use the. That's why we have used the pen. Okay? To refer to a person or thing that is well known. कोई ऐसी चीज़ या place जो well known है. That means जिसको आप वो बोल रहे हो, वो उस चीज़ को जानते हैं. Like let's go to the park. हम park चलते हैं. So the park must be common. That means उस park के बारे में जिसको आप बोल रहे हो उनको भी पता होगा. Okay, so it's well known park. So let's go to the park. Okay? To refer to something already mentioned. Okay, जब कोई चीज़ ऑलरेडी आपने बता दी है उसके बारे में, that time and then you are using it again. So
अ थीफ एंटर्ड आवर हाउस, एक थीफ हमारे घर में आया. द थीफ वॉज कॉट, एंड जो थीफ था वो पकड़ा गया. सो द थीफ, कौन से थीफ की बात हो रही है यहाँ पे? वही वाला थीफ जो आपके घर में आया था. ओके, सो पर्टिकुलर उसी थीफ की बात हो रही है. ओके, व्हेन अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स होल क्लास, जब आपका कोई सिंगुलर नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी कैटेगरी को. द लायन इज द किंग ऑफ द जंगल. सो लायन, यहाँ पे here we are not talking about only one lion. Okay, we are talking about the category lion. Okay, but this rule is not applied on mankind. That means man या men के लिए ये यूज नहीं होता. Man is responsible for harming environment. Okay, so यहाँ पे आप the man नहीं यूज करोगे. Okay, here you'll use only man, as this rule is not applied for mankind. Okay, you'll use the with the names of oceans, seas, gulfs and rivers, but not lakes. Lakes के name के साथ use नहीं करोगे. You'll use it with seas, oceans, gulfs and rivers. You'll use it with groups of islands. Okay, islands की बात करेंगे तब हम use करेंगे the. Mountain ranges के साथ use होगा like the Himalayas, but not peaks. Mountain peaks like Mount Everest, that will not be called the Mount Everest. Okay, it will be used before the names of sacred books, right, like the Gita, right, newspapers, the Times of India, and well-known buildings, the Taj Mahal. Okay, it will be used with the names of unique objects like the sun, the moon. Okay, with such unique objects we'll use the, right. It will be used before ordinal numbers and expressions like middle top. Okay, now what are ordinal numbers, students? Order, like you have first, जैसे ranks नहीं होती हैं, sequence, first, second, third, fourth, fifth, sixth. Okay, with that you are going to use it. Like the second girl in the first row is my sister. So this, just see, we have used the. The whole class was talking. पूरी class बात कर रही थी. To lay emphasis. What is emphasis? Focus करना किसी बात पे, जोर देते हो आप. Okay, globalization is the order of the day. Okay, is the order. आप focus कर रहे हो उस बात पे, आप जोर दे रहे हो उस बात पे. It will be used before nationalities, communities, but not before languages. ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी languages के साथ the use नहीं करना. Okay, with nationalities, like the Chinese are hardworking people. So here you have used because we are talking about Chinese people. Spanish, अगर आप किसी भी language की बात कर रहे हो, let's talk about English. So we will never use the English. If we talk about Spanish, we will not use the Spanish, only Hindi. Okay? So these were the uses of articles. Now very important, when not to use the article, और कब हमको article use नहीं करना है. Just see, the indefinite articles are not used. कहाँ पे use नहीं करने हमको? or and uncountable nouns के साथ use नहीं करने. You cannot say a rice, it will be wrong. or rice नहीं कह सकते हो, सिर्फ एक rice. No. Before names of meals, कभी भी आप meals के name like lunch, dinner, supper, no. Lunch starts at 1 PM. ऐसे नहीं बोलोगे आप. A lunch starts at 1 PM. Okay? Like if you are having any special meal, आप किसी special meal की बात कर रहे हो, at that time you can use a. Like a dinner in his honor. So we have organized a dinner in his honor. That means उनके honor में, उनके आने की खुशी में we have organized a dinner. That time you can use. Okay, अगर आप किसी special meal की बात कर रहे हो. Okay, before names of seasons, winter, summer, spring, you will not use any article. Parts of body, ear, leg, hands, no, you will not use any articles. No article is used before proper nouns. किसी भी proper noun, किसी भी name के आगे, किसी person का name है, उसके आगे कभी use नहीं करोगे आप article. Names of languages में कभी use नहीं करना. I've told you, no need to speak the Hindi, the English, no. Before names of any sports. Okay, like if you say he plays cricket, you will not say he plays the cricket, no. Okay, before names of cities, cities के आगे भी कभी use नहीं करता. Right, you cannot say like, you know, like in a name, in the case of countries also, you cannot say the India. Okay, in certain idiomatic expressions and special phrases. What are idioms? Idioms आपको पता है होते हैं मुहावरे लोग होती हैं,
राइट. उन दोज केसेस ऑल्सो सम ऑफ देम आर देयर जिनके साथ आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे, लाइक बाय बस, ऑन फूड, एट डिनर, इन टाउन. Okay, you are not going to use any of the articles in front of these, before these. Okay. So students, I hope rules of all the articles, all three articles, definite and indefinite, all the rules are clear to you. Okay, so we are having two types of articles, definite article and indefinite articles. Okay, total में हमारे पास three articles होते हैं, a, and the. Okay, ये three articles होते हैं. Definite article is the, और इसको आप कैसे लर्न करोगे कि डेफिनेट आर्टिकल द होता है, विच इज डेफिनेट, स्पेसिफिक होता है जो द, और इनडेफिनेट जो स्पेसिफिक नहीं होता है, जनरल होता है, ओ एंड एन. ओके, दीज आर द टू काइंड्स. ओके, एंड व्हेन टू यूज अ, व्हेन नॉट टू. अ एंड एन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे, सिंगुलर के साथ. ओके, एंड लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस. A will be used when the starting sound of the word is consonant sound, and an will be used when it is giving vowel sound. Okay, so whenever you get any word, आपको सबसे पहले देखना है उसमें sound कौन सा create हो रहा है. अगर वो vowel sound है then you will use an, और अगर वो consonant sound है then you will use a. Okay, you all know vowels we are having 5, a, e, i, o, u, and consonants are 21. Other than vowels सारे consonants होते हैं. Okay, so I hope this is clear to you. And the is used for specific things, जो चीज़ particular है, which is not general. Okay, I hope all the rules are clear to you. Just go through all the uses, students. सारे एक बार uses देखने हैं. Okay, again read through your book. Okay, you can watch the video again. If you find any issue, आपको confusion हो रहा है when to use, when not to, please ask me on my personal chat. Okay, so I'll see you all in your next class, and do try all the back exercises, right? Take care, students. See you all in your next class. Take care. Thank you.